हेलो गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ गेम ऑफ माइन जिसमें मैंने पोलैंड के यूट्यूबर को हरा दिया. ही हैज़ 1K सब्सक्राइबर्स और आई जस्ट हैव अ मीजली 5 सब्सक्राइबर्स. तो मुझे नहीं लगता ये वो वीडियो देखेगा भी. बट इफ़ यू आर वाचिंग दिस वीडियो, आई एम नॉट ट्राइंग टू जस्ट फ्लेक्स दिस. आई एम थिंकिंग कि ये गेम that this game is a little bit instructive, so I just want to talk about it. So ये बस उसके लिए मैसेज था. अब मुझे शायद अपने रिव्यू पे जाना चाहिए. एज यू कैन सी मैंने 6400 मतलब 6500 गेम्स खेल ली है. सो यू वुड थिंक कि इतनी सारी गेम्स कैसे खेल ली. सो आइदर यू कैन talk to women or you can play chess, and I'm scared of women, so I play chess every day a lot. So let's talk about this game. As you can see, it's a win, but it's hilarious in between. So I played d4 and I made my Illuminati triangle here. जो मेरी opening है उसी का triangle. And this bishop is here instead of जो मैं suggest करता हूँ अंदर, क्योंकि I watched this Norway chess tournament जिसमें Ali Reza Fariuzia just beat Fabiano Caruana and Tingley Ren with the London system. और मुझे सही में feel हुआ, why, what is this, like London system is not as boring as people say it is. Like लोगों को लगता है ये boring है, but it is not boring. Maybe it is a little bit fun. तो मैंने सोचा चलो let's try this. So here he fianchetted his bishop, and this structure I really hate against the London system. Mostly लोग ऐसे खेलते नहीं है. It is a rare move order, but जब ये खेलते हैं it's like they will keep their king side safe and instead they will attack on the queen side. आगे देखोगे he attacks on my queen side, he tries. Now as you can see, जो मैंने जो suggestions देता था अपने opening में कि you have to play b3 to play c4, instead वो same idea use कर रहा है as black. So I don't care about this. I don't care क्योंकि you will just take in the center. Always take in the center. मतलब C से D पे लो, E से D पे लो, मतलब F से E पे लो. It is always take in the center. Never do it like this. Like this is also great. I don't know. मुझसे मत पूछो भाई, नहीं आता खेलना. So I wasn't scared कि takes होगा. And this move also doesn't scare me. You just bring your bishop back. I did castle. And now he's trying, देखो queen side attack करने की जो कोशिश है यहाँ पे, but queen side पे मेरा king नहीं है. As you can see, जैसे मैंने देखा कि this so many pawns are coming towards the queen side, मैंने king side castle कर लिया because I don't wanna get in those troubles. Instead of him trying to opening up my queen side, मैं center खोलने की कोशिश कर रहा हूँ because his king is in the center by this move e4. Now, but now I felt like कि maybe of instead opening the center, as you can see यहाँ पे देखो e लो, यहाँ पे गिर रहा है एडवांटेज मेरे लिए, ऑफ कोर्स बिकॉज मुझे ओपन ही करना था. ओपनिंग इज द बेस्ट आइडिया हियर, बट इंस्टेड ऑफ दैट मुझे फील हुआ कि इफ आई क्लोज दिस पोजीशन इवन दिस स्क्वायर विल ऑलवेज बी वीक, इसलिए मैंने वो मूव खेला. नाउ आई एम ब्रिंगिंग माई क्वीन हियर. पहले मैं क्वीन इधर लाया फॉर दिस pawn break. Now I'm bringing this queen here for this bishop trade. Every move has an idea. Try to calculate like that. It will help. Now his knight is attacking और position closed है और सारे pawns white squares पे हैं उसके. So my bishop will always be bad. Instead of keeping a bishop like that, I traded the bishop. So now I want to trade my other bishop too. Because position closed, I don't want his bishop here. So I took his bishop. He took, I took this pawn. Now he takes with the queen. And here ये move का idea ये है कि I wanna trade my queen later. So let's see.
इधर ये मूव आया एंड दिस इज अ ग्रेट मूव बिकॉज मेरी क्वीन को वापस हिलना पड़ रहा है एंड दिस पॉन इज जस्ट गेटिंग फ्री अमाउंट ऑफ स्पेस। मे बी लास्ट मूव दिस मूव इज गिवन एज अ मिस्टेक क्योंकि दिस पॉन ये पॉन को रोकने के लिए मे बी मुझे कुछ खेलना था, आई डोंट नो। सो I just brought my queen back, and now suddenly him trading. Maybe this was the wrong idea for him कि उसे trade नहीं करना था, because now I get the access to this square later. Like I played this move, it took my knight, and I took back the bishop with my other knight. And now my जो knight मेरा यहाँ पे सिर्फ बैठा हुआ था, now it is active और उसका bishop went away for nothing. वैसा ही कुछ। So now I get this square and I use that square immediately by bringing my queen there. Now my idea is कि मुझे queen trade चाहिए as fast as possible. अगर उसने queen trade कर लिया तो my rook will be active here on the b file. My this rook is already active जो takes करेगा वहाँ पे. Then it will attack this knight. My this knight will come forward here. This position has a lot of venom. अगर उसकी queen यहाँ से defend करना बंद कर देगी square. So I wanted this queen trade. He took and he gave me my dream position and he made a blunder. ये knight को इधर लाने की जगह maybe he should have tried this move. This move is also bad as you can see. I am not going to calculate कि वो move खराब क्यों है, but this the other move he played is another amount of bad क्योंकि now as you can see ये रुक ये नाइट को डिफेंड कर रहा है, ये रुक ये नाइट को अटैक कर रहा है. सो इफ आई वांट टू विन दिस नाइट व्हाट डू आई हैव टू डू? आई हैव टू अटैक हिज रुक व्हिच डिफेंड्स द नाइट एंड एज यू कैन सी उसके रुक के पास कोई भी मूव्स नहीं है जो उस नाइट को डिफेंड कर सके आफ्टर हिम सेविंग द रुक. सो he just gives up his rook and I bring both of my rooks on the same e file to attack this knight. He defends. I want to win this pawn. Now this is also very instructional मेरे हिसाब से. After this move, why did I push? Because now this pawn is an isolated pawn. You see, उसके पीछे कोई defender नहीं है and I'll just have to play this and this and this. In 3 moves, I will win his pawn. If all this is traded away, rooks, knights and all this. So I felt like I'm winning a pawn. यहाँ पे मैंने ट्रेड किया because it makes this pawn even more isolated as you can see. Now I brought my rook to give it activity थोड़ा सा. Now I'm at kind of targeting the knight. It is now this looks like scary कि मेरे रुक गए, but it is not actually a fork. You can give a check. And ये check में अगर वो king हिलाता then I would win a rook, he would also win a rook. It would be a fair trade, but I would have a rook, he would only have a knight. So rook is better than a knight. So I win this pawn. Now here maybe the better move was giving this check and then winning the knight immediately. But instead of that, the game ये game बहुत लंबी चली है. Like as you can see 10 मिनट में से बस 5 मिनट बचे हैं. So I was little bit tired and मैंने takes किया. And I gave up my rook for a knight of course, but I'm winning this pawn. प्लस मैं ये pawn जीत चुका हूँ. यहाँ पे जो pawn था वो मैं जीत चुका हूँ. And it is like I'm up many pawns. I'm up 2 pawns after this. So as you can see यहाँ पे भी this feels like कि उसका defense हो चुका है. But I just moved my pawn here and now he has to move his king. So I win this pawn. And all the advantage looks like it's gone, but the moves that gives a draw are really hard. So मुझे खुद नहीं दिख रहे थे कि black के moves क्या है जो advantage को कर सकते हैं. It feels like this is winning. Isn't this winning? So now I get my queen, वो gets his queen. I give check और मैं last में trade कर लूँगा.
why is this -12? अगर तुम सही में कैलकुलेट कर सकते हो ये लाइन, देन टेल मी भाई कि ये -12 क्यों है? बिकॉज आई डोंट सी इट भाई, आई रियली डोंट सी दिस। मे बी ही इज इन द स्क्वायर एंड ही कैन डिफेंड, क्या है भाई? देर इज नो वे कि वो डिफेंड कर सकता है। Okay, maybe the king here is the best move. Okay. But so now, as you can see, ये pawn एक square बना रहा है, ठीक है? I talked about it in the last game review कि as the king is in the square, he can stop the pawn और अब उसका pawn पहुंच जाएगा पहले. So this was really bad, but this was really bad. So now, but he played the wrong move. You see, अब time कम है भाई. So now I played my pawn और मेरी queen पहले ही बन गई. Now I just have to trade my queen. You see, and here it was just a draw. अगर वो king यहाँ पे रहता, it was just perpetual check and a draw. Huh? How is this +2? I don't know why. Let me know how is this +2? Why? ये कैसे है भाई? ये how is this check? No. As you can see, I'm a human after all. He is also a human, the YouTuber. So, and after this, I can just win his queen in some moves. यहाँ पे मैंने जीत ली queen. It's a queen trade, but here he resigned, of course, क्योंकि मेरा king यहाँ पे takes करेगा. Then king would go here, here. This is a promotion और उसके king को कितने सारे moves खेलने पड़ेंगे to reach there. He just can't reach in time. इसलिए so I win, and this was it. Maybe the opening was instructional यार. The end game was really dumb, but opening was really good मेरे हिसाब से. Maybe it is something जो तुमको कुछ सीखने को मिले. Maybe I hope कुछ सीखने को मिले. So thank you for watching guys. और बोलो देश छोड़ के चला जा भाई, देश छोड़ के पढ़ने चला जा भाई. यहाँ तक देखा है तो ये बोल दो. लाइक लाइक ऑल अदर वीडियोस में कुछ ना कुछ तो बोलता ही हूँ कि वीडियो के एंड में बोलो. एंड आई रियली, अगर सही में यार कोई देख रहा है यहाँ तक, तो लाइक सब्सक्राइब और कुछ कमेंट कर दो भाई कि कीप अपलोडिंग भाई, कुछ ऐसा कुछ यार. नहीं तो मुझे सही में फीलिंग नहीं आ रही कि मैं अपलोड करूँ. और बिकॉज 15 पीपल वॉच, ओनली 5 आर सब्सक्राइब्ड और सिर्फ 3 लाइक होते हैं. इट जस्ट डजंट फील लाइक कि मेरे कंटेंट को अप्रिसिएशन मिल भी रहा है. बट आई नो कि मेरी क्वालिटी भी उतनी ग्रेट नहीं है. मे बी इफ पीपल रियली सपोर्ट तो क्वालिटी इम्प्रूव हो सकती है. आई डोंट नो भाई. जस्ट डू व्हाट यू फील लाइक. बाय.